So the name of the topic that we are going to discuss is profit and gains of business and profits. First of all, what do you mean by business? What do you mean by profession? And are they one and the same or they are different? They are different. How they are different? What is a business? What is a business? So you are asking a wrong question to the wrong class in a commerce class, and you can't ask anyone what is a business. Everyone knows what is a business. The business in very simple words means buying and selling of goods. That is called as a trading. It can be manufacturing of the goods and selling the goods. I can be a manufacturer, I can be a trader. Parleji is a manufacturer, Bata is a manufacturer. Shopkeeper is a trader. He doesn't manufacture, but he buys and sells. Do you require any kind of qualification to become a businessman? It does help if you have qualifications, if you are well educated. An MBA degree might help you more to expand your business, no doubt about that. But then there are people who might not be not at all educated, but they might still have succeeded in the business. So honestly, you don't need any qualifications to start a business or to operate a business as such. Note गिनने को आया बस हो गया. That is the basic technology I use for starting a business. Fine, sir. What is a profession then? What is a profession? What is a profession? Pardon? Providing services. Give an example. Chartered accountant, teacher, doctor, lawyer. Can anyone become a lawyer and practice in the court? You need a degree. You need a certificate from the Indian Medical Association to run a clinic or to work as a doctor. I get a certificate or a membership. I get a certificate or I get a membership from the Indian Medical Association. I become a member of the ICAI, then only I can practice as a chartered accountant. So moral of the story, profession होना अगर करना है, profession basically means some kind of services. A mechanic is a professional, assuming he has a degree. Engineer, architect, doctor, lawyer, chartered accountant, cost accountant, a valuer, actuarial officers working for the insurance companies. All this can be called as the professionals because they possess some basic qualifications based on which only they are eligible to work as that. They are eligible to work in that particular field. That is called as a profession. तो आपने दो वर्ड्स का बात किया. One was business, one was profession. One more word is vocation. Any idea what is a vocation? No one. Hey, कोई माइकल लाल तो बताएगा what is a vocation? No one. बोलो 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 जल्दी. People don't know what is a vocation. You have reached till SY. Google करूँ नका. Google ही करना तो यहाँ पे Google ही कर दूंगा मैं भी. वहीं से मीनिंग देख लो. One of my friend is a choreographer. He was failed student. He was pass out भी नहीं है. He was failed है. He is a choreographer. He has won Filmfare Awards for few of the vernacular movies, vernacular medium movies, vernacular language movies. He has some dancing skills. नहीं dancing skills नहीं. Choreographer के लिए dancing skills नहीं लगता है सिर्फ. There is something beyond that.
You need to know lot of things regarding the camera and so many things. He might not have any kind of qualifications, but he has got a certain degree of skills. और स्किल्स और एक्सपीरियंस के बलबूते पर उसको काम मिलता है. One of my colleague, not a colleague exactly, one of my close friend, he's a painter. Fourth fail है, but he's a painter. He can make wall paintings, he can make pencil sketches, and so many different things. So a painter may be qualified from JJ School of Arts, or a painter may not be qualified, but he may still possess some skills which may help him to earn the money. Any such people who don't have a formal degree, but who have the skills, who have the knowledge, who have the experience, can be called as the vocation. Generally, hobbies को हम लोग vocation में count करते हैं. Hobbies are counted under the heading vocation. A driver's job can be also called as a vocation because he might not be highly qualified or well educated, but he knows the driving skills. So learning skills, one of my brother-in-law, he is hardly 10th passed. He knows how to repair the mobile phones. Skill. He is earning 25, 30, 40,000 per month. Not a bad amount for someone who is hardly 10th pass. The moral of the story, vocation में सिर्फ skills लगता है. Dancer, actor can be called as a vocation. Vocation can be something that is a hobby. Like I am a very good cook, and good cook in the sense I can cook for near about the whole classroom sitting here right now. I can cook for 50 people all alone. But is it my profession? Do I have a degree? Is it my business? Am I a caterer who cooks the food? Hobby hai. And I have cooked for 50 people at the most till now. वो भी vocation बोल सकते हो उसको. Okay, what my point? Sir, business income में सैलरी में हमने पॉइंट किया था, सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव. सैलरी में लॉस नहीं हो सकता कभी. आप लोग इसे कैसे बात कर रहे हो, लॉस कैसे नहीं हो सकता है? सर, आई वर्क फॉर किंगफिशर एयरलाइंस फॉर 12 months. दे पेड मी ओनली 2 months सैलरी. तो 10 महीने का सैलरी नहीं मिला मुझे. इनकम टैक्स उसको लॉस कंसिडर नहीं करेगा. इनकम टैक्स में सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, whichever is less, whichever is earlier. So sorry. मैंने 12 months काम किया, हर महीने का सैलरी नेक्स्ट मंथ में ड्यू था. चलो हर महीने का सैलरी उसी मंथ में ड्यू था. How many months I work? 12 months. How much is my salary due? 12 month का सैलरी. How much is the salary received? 1 month. सर 12 महीना काम किया, 12 महीने का सैलरी ड्यू हुआ, लेकिन सैलरी कितने महीने का दिया एम्प्लॉयर ने? टैक्सेबल कितना होगा? सर पूरा 12 मंथ का टैक्सेबल होगा. पूरा 12 मंथ का टैक्सेबल होगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 11 महीने का सैलरी नहीं मिला तो मेरा लॉस है. नहीं, लॉस नहीं है. लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? आपके जेब से पैसा नहीं गया. You didn't lose any money. Loss should be in terms of monetary loss. आपके जेब से पैसा गया क्या? आपका मेहनत पानी में क्या बोल सकता हूं? I worked for someone and I didn't receive the remuneration. ऐसा मैं बोल सकता हूं. मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा गया क्या? इनकम टैक्स बोलता है कि
लॉस शुड बी रियल, तुम्हारे जेब से पैसा जाना चाहिए। अब बिजनेस की बात करते हैं, मैंने बिजनेस में एक्सपेंडिचर किया 2 लाख रुपया, पैसा कितना गया मेरा? सेल करके पैसा कितना आया? 1.5 लाख। आई स्पेंड 2 लाख रुपीज आउट ऑफ माई पॉकेट्स, आई रिसीव्ड और आई अर्न 1,50,000, नेट लॉस कितना हुआ? ये 50,000 मेरे जेब से गया है ना पैसा, इसके लिए ये लॉस लॉजिकली समझो सर, इसके लिए ये लॉस क्या है? अलाउड है। बिजनेस का लॉस अलाउड है। अच्छा, बिजनेस का इनकम कैसे निकालने? एकदम सिंपल है सर। बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालने का बोलो भाई? सर बिजनेस प्रॉफिट में क्या करेंगे? एकदम सिंपल है सर, टोटल इनकम ले लो माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर दो। बराबर ना? कुछ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, आप तो बचपन से कर रहे हो। हाँ, बचपन से मतलब 11 से, कॉलेज वाले बच्चे के लिए बचपन 11 से शुरू होता है। सर हमने फाइनल अकाउंट्स किया, फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे आप? डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस लेते थे, क्रेडिट साइड में क्या लेते थे? इनकम लेते थे, नेट प्रॉफिट मिलता था, वही आपका बिजनेस का प्रॉफिट होता था जो कैपिटल अकाउंट में जाता था। ऐसे ही होता था ना। अभी हमको क्या सीखना है फिर कि कौन सा इनकम आपका बिजनेस इनकम होगा और कौन सा एक्सपेंसेस आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा। जो एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हो उनको कहा जाएगा एक्सपेंसेस अलाउड। अलाउड मतलब expenses which can be subtracted, which can be, I will use the word deducted, tax में लोग word use करते हैं deduction, expenses which can be deducted। जो एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो बिजनेस इनकम के सामने उन्हें कहा जाएगा अलाउड एक्सपेंसेस। क्या कहा जाएगा? तो पहले इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, कौन सा इनकम बिजनेस इनकम कहलाएगा? Okay, I won't read from here. I won't read from here. Right now, I won't read. I will read later on. तो पहला तो सबसे कॉमन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमन सेंस है सर। बिजनेस में मैंने कोई चीज बेचा, कोई सर्विस प्रोवाइड किया, उसका मुझे फीस मिला, उसका मुझे कंपनसेशन मिला, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस इनकम। वो क्या कहलाएगा? So by the way, I have uploaded all the notes on the Google Classroom. Lectures I will upload tonight. Hold on. Sir, any sale of goods and services is business income. Okay, sir. Sir, any compensation for not doing business is also business income. Any compensation for not doing the business is also a business income. Example, sir. चलो मेरा कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे मैं 11th और 12th में पढ़ाता हूँ। I teach 11th and 12th commerce. There is one more coaching class in front of my class called as Nayar classes. No offense meant for any of the Nayars. I am present here. Okay. Nayar classes also teaches 11th, 12th commerce plus they have CA foundation as well. I am planning to start CA foundation batch. I launched the advertisement. नायर क्लासेस का प्रोफेसर नायर जो ओनर है वो मेरे पास आता है, कहता है सतीश डोंट स्टार्ट विद सीए फाउंडेशन। मैंने कहा करूंगा। उसने कहा 2 मिनट सुन तो लो पूरी बात। डोंट स्टार्ट सीए फाउंडेशन, आई विल पे यू ₹10 lakhs पर एनम। मैंने कहा नहीं तो भी शुरू करूंगा। मतलब पूरी बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोला आई विल पे यू 10 लाख रुपीज पर एनम प्लस जितना भी बच्चा मेरे पास क्लास में आएगा तेरा रेफरेंस से
उसका 30% फीस भी मैं देखो पे करेगा। Here I am offered rupees 10 lakhs as compensation for not starting CA foundation batch. ये भी क्या है मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा। अनदर एग्जांपल, मेरे पास पार्ले जी का एजेंसी है एक्सक्लूसिवली इन ठाणे, एक्सक्लूसिवली इन ठाणे सिर्फ मैं ही पार्ले जी का प्रोडक्ट्स बेच सकता हूं और पिछले 20 साल से मैं ही बेच रहा हूं ऑल ओवर ठाणे, और कोई नहीं कर सकता। पार्ले जी वाले मेरे पास आता है, बोलता है तुम्हारा एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं हम लोग, दे आर टर्मिनेटिंग माय एजेंसी। पार्ले जी वाला बोलते हैं काम करो, तुम्हारा एजेंसी हम लोग बंद कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो घोर अन्याय है। They offered me 5 crores. They offered me, बोला आपका एजेंसी बंद कर रहे हैं, हमको मल्टीपल लोगों को एजेंसी देने का है, एक को नहीं देने का, हमको एक्सपांड करने का। यहाँ पे कंपनसेशन इज ऑफर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, compensation is offered for termination of agency. Sometimes there can be change in the terms and conditions of a contract. So salary में भी ये पॉइंट था, मेरा अपॉइंटमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ एम्प्लॉयर की तरफ से और उसने मुझे कुछ कंपनसेशन दिया, तो उसे कहा जाता था प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 10,000 tons of rice to a school at rupees 35 rupees per kg। स्कूल वालों ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किया, उसकी वजह से नुकसान मेरा होने वाला है, मैं सप्लायर है। एंड दे ऑफर्ड मी कि बॉस वी आर चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and because of that if you are suffering any losses we are willing to pay you the compensation, whatever amount they pay me, 1 lakh, 1 crore, 5 crore, 10 crore, whatever amount। सर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने पे जो मुझे कंपनसेशन मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा मेरा कॉमन सेंस। अच्छा, समटाइम्स आई माइट सेल माय लाइसेंस to operate a business। मेरे पास एक वाइन शॉप का लाइसेंस है, I sell that to Mr. Y and he offered me rupees 2 crore for the same। सर यहाँ पे मैंने वाइन शॉप का लाइसेंस सेल किया, मेरा प्रीमाइसेस सेल नहीं किया, मेरा शॉप सेल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। मैं अपना वाइन शॉप लाइसेंस सरेंडर करेगा और किसी और को ट्रांसफर कर देगा, बदले मुझे 2 करोड़ रुपया मिलेगा उससे, दैट 2 crore rupees will be taxable as my। Okay, sometimes what happens, I might give my business premises on rental basis। सर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है सर। मेरे एक होटल है शाम के टाइम पे चलता है फ्रॉम 6 o'clock in the evening till late 2 o'clock at night। सुबह के टाइम में इतना क्राउड नहीं आता है। मैं क्या करता, मेरे होटल के बाहर का एक प्रीमाइसेस है, वो एक साउथ इंडियन कुक को रेंट पे देता हूँ। He pays me rent rupees 20,000 per month for using 100 square feet of space in front of my shop, just to sell the breakfast items in the morning from 7 to 12 or 6 to 12। सुबह 6 से लेके 12 के बीच में मेरा होटल के सामने वाला प्रीमाइसेस मैंने किसी को रेंट पे दिया, उसका जो रेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा। तो नॉर्मल केस में अगर मैं लैंडलॉर्ड है और मैंने अपना प्रीमाइसेस
किसी को रेंट पे दिया तो उससे जो मिलने वाला रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। अभी तक वो टॉपिक आपका हुआ नहीं है, और यहाँ पे सर अगर मैंने मेरा बिजनेस प्रीमाइसेस किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो वो मेरा बिजनेस इनकम कहता है। एक अनदर एग्जांपल, आई हैव गॉट अ फैक्ट्री जहां पर हम लोग शर्ट्स बनाते हैं, वी मैन्युफैक्चर शर्ट्स, वी मैन्युफैक्चर सम गारमेंट्स, बट हमारा पूरा कैपेसिटी यूज नहीं होता। वी यूज इट फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल इवनिंग 4 o'clock, और मॉर्निंग 8 o'clock टिल आफ्टरनून 2 o'clock। उसके बाद हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस बंद रहता है। So one of my student, what's your name? Sudhanshu. Sudhanshu comes to me and he says to me, sir, I want your premises on rental basis. अब बंदे ने मेरा जगह नहीं रेंट पे लिया है, मेरा पूरा सेटअप रेंट पे लिया हुआ है। वर्कर्स मेरे रहेंगे, मशीन्स मेरा रहेगा, लाइट बिल भी मैं ही पे करूंगा, पूरा प्रीमाइसेस मेरे अंडर होगा। सिर्फ मैंने वो एक शिफ्ट में, लेट अस से 4 घंटे का शिफ्ट के लिए मैंने सुधांशु को रेंट पे दे दिया, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स है, वो सेल करना चाहता है मार्केट में, या उसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी खुद का कम है, ही वांट्स एडिशनल कैपेसिटी, उसके पास शॉर्टेज है कैपेसिटी का, मेरे पास सरप्लस है। तो मैंने अपना फैक्ट्री प्रीमाइसेस along with the whole setup, along with the whole labor, I have given on rent to Sudhanshu. Whatever money I receive from him will be called as my business. चलो, any kind of ड्यूटी ड्रॉबैक, भाई और बहनों, ड्यूटी मतलब एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी मतलब एनी काइंड ऑफ टैक्सेस levied by the government other than income tax, indirect taxes, normally custom duty, excise duty और GST। सर एनी काइंड ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है? What do you mean by duty drawback? In very simple words, I'll explain. I don't want to go into too much of technical details. Sir, I am an exporter. The government offers me a scheme. Government offers me a scheme कि आप साल भर में अगर 10,000 टन एक्सपोर्ट करोगे गुड्स, तो आपने जितना एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया उसमें से हम आपको 25% रिफंड देंगे। If I export 10,000 tons of goods annually, the government offers me 25% refund of the excise of the custom duty paid by me on the export. These are the incentives given to increase the export, because that will fetch more foreign currency to the government. And government needs the foreign currency to pay the foreign liabilities for the import of crude oil and all that stuff. पॉइंट है क्या बोल रहा था, भूल गया। अरे पढ़ के नहीं आया मैं आज, क्या हो गया? ऑल इज वेल बोलने का, क्या बोलने का? मैं बोल रहा था, ये जो मैंने 10,000 टन गुड्स एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में मुझे जो कस्टम ड्यूटी रिफंड मिलेगा या एक्साइज ड्यूटी रिफंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी। वन काइंड ऑफ रिफंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, और क्या है? मनी रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स अंडर ड्यूटी एंटाइटलमेंट स्कीम। दिस इज एक्चुअली आउटडेटेड पॉइंट, बट अपने मटेरियल में कहीं ना कहीं पे आएगा तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। पोस्ट 1991 इट इज पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG। गवर्नमेंट हैड फ्यू स्कीम्स कि आप इतना इतना इंपोर्ट करेगा, जितना इंपोर्ट कम करेगा या जितना एक्सपोर्ट करेगा, उसके बेस पे दे यूज्ड टू इशू ए पासबुक, और उसके बेस पे कुछ बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से।
अगर आपको बेनिफिट क्लेम नहीं करना तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा. अच्छा, एनी काइंड ऑफ subsidies, cash subsidies received from the government is again a business income. Any kind of cash incentives from the government, again a business income. Any kind of money received for sale of trademarks, copyrights, patents, license to operate a business. Imagine I am a firm, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी. हम वो टेक्नोलॉजी किसी और को सेल कर देते हैं. हमने वो टेक्नोलॉजी बेच दिया, मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या किया, वो बिजनेस करने का जो बेसिक हमारा टेक्निक था वही किसी और को दे दिया. So again that will be called as a business income. Will be called as business income. देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं. Let's see here. टॉपिक इजी है लेकिन वास्ट है, बहुत कुछ है. हम सब तो नहीं करेंगे बट बहुत कुछ करेंगे, और जो नहीं करूंगा मैं ओपनली बताऊंगा क्या क्या नहीं करने वाला हूं. देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एनी कंपनसेशन और पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड in connection with termination of agency or modification of terms and conditions, in connection with the vesting in the government or any corporation owned or controlled by the government. ये पर मैंने डिस्कस नहीं किया. Sometimes I might have to surrender my business premises to the government. जहां पर मेरा शोरूम था वहां से मेट्रो लाइन जाने वाला है, गवर्नमेंट ने वो प्रीमाइसेस कंपल्सरी मेरे से एक्वायर कर लिया. Whatever amount I receive for taking over my business or business assets will be also called as my business income. इसके बाद वाला पॉइंट देखो, any compensation in connection with the termination or modification of the terms and conditions of a contract relating to the business, मतलब business contract. अभी हमने डिस्कस किया है पॉइंट. Okay, I won't discuss this point beyond our syllabus. तो भी stop में बता देता हूँ मैं. A lot of times there are trade associations, that can be trade unions, there can be business associations. Any money earned by such shopkeepers association, business association, okay, leather manufacturer association, jeans manufacturer association, or any kind of union, any kind of body of individuals, everything is taxable as business income. और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, वो मैंने बोला था पासबुक स्कीम वाला पॉइंट. कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रीपेड कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक, अभी हमने डिस्कस किया. प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, अभी आउटडेटेड हो गया. ऑनेस्टली अभी आउटडेटेड हो गया ये. ओके, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट. तो ये परक्विजिट हमने सैलरी में पढ़ा था, यहाँ पर परक्विजिट कहाँ से आया? हाँ भाई, यहाँ पर भी हो सकता है. आई एम ए लॉयर, आई वॉन द केस फॉर सुधांशु. He didn't pay me a single amount of money. He gifted me a BMW. Money received, अपना income received in kind, taxable. अच्छा, ना पैसा दिया ना गिफ्ट दिया. सुधांशु का मैंने केस जीत के दिया, तो सुधांशु gave me a 10 days का वाउचर to travel to Dubai, to and fro. Again बेनिफिट मिल रहा है. So any such benefit because of your business connection is taxable as business income. डाउट है? लास्ट पॉइंट, ऐसा बोलेगा तो बच्चा थोड़ा ध्यान देता है. ओके, any sum of money received by a partner
from a partnership firm, any sum of money received by a partner from the is taxable as business or professional income. सर मेरे पार्टनरशिप फर्म से मुझे एवरी मंथ सैलरी मिलता है, इज इट माय सैलरी इनकम? नो. क्या लॉजिक है सर? पार्टनर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनर इज द ओनर एंड द एजेंट. अगर आपने लॉ कहीं पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, every partner is the owner as well as the agent of the partnership firm, because there is no employer employee relationship. क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म से जो भी पैसा मिलेगा वो सैलरी इनकम नहीं कहलाएगा. तो हम उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ऑफ बिजनेस. और so partner receiving bonus from the partnership firm, partner receiving commission from the partnership firm, partner receiving fixed salary from the partnership firm, partner receiving interest on capital from the partnership firm. सर सब कुछ तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहलाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कहलाएगा. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी मनी पेड बाय ओवरटाइम अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, सैलरी इनकम कहलाएगा क्या? नहीं. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. One of the basic thing to call anything as a income is that, anything to be called as a salary is that there must be employer employee relationship. यहाँ पर रिलेशनशिप है ही नहीं, इसके लिए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ क्या कहलाएगा? बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट कहलाएगा. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? मैंने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया. Keyman insurance policy. How many of you know what is a Keyman insurance policy? No one. Any compensation received under Keyman insurance policy is taxable as business income. और अगर वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा तो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें टैक्सेबल होगा. कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? एनी आइडिया? भाई और बहनों, व्हाट इज ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? व्हाट इज ए कीमैन? नो आइडिया. हाँ जी, you can give wrong answers. Wrong answers are welcome. Rubbish answers are welcome. बोलिए, बोलना है. पैसा भरा है, तुम ही बोलने का, मैं कुछ नहीं बोलेगा. ऐसा. What is a key man? Key man is an important person. For business, there are a lot of people. Let us take an example of a company. Let us take example of Reliance. Certain people in the organization are most important. Mukesh Ambani is very important. There can be some other directors who are very important. Sir, कल अगर उनका डेथ होगा, उनके घर वालों का जो लॉस होगा उनका पर्सनल लॉस है, वो उनका. लेकिन रिलायंस के बिजनेस का भी तो नुकसान होगा. They have lost a valuable human asset, which is invaluable, which cannot be replaced completely. तुम बोलेगा हम दो उससे ज्यादा क्वालिफाइड लोग लेके आएंगे, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग लेके आएंगे, कुछ किसको भी लाओ ना. ह्यूमन बीइंग्स can't be replaced by anyone. Human life is invaluable. So what large companies do, they carry out the insurance of such important people who are very important for them for business planning and business development and expansion.
So let us say Mr. Y is a very important person in the company and company ने उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला. कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. Who is paying the premium? Company. If anything happens to Mr. Y, either he dies or he survives but he becomes incapable to work, he might be paid some compensation from the insurance company. Whatever amount he will receive as compensation or whatever amount is received by his survivors or legal heirs as compensation will be taxable as business or professional income. All clear? शॉर्ट में डिस्कस किया. की मेंशन बोले हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. वी आर डिस्कसिंग ओनली टू द पॉइंट. These are the various incomes. There are few things I haven't discussed. 9th और 10th पर मैंने डिस्कस नहीं किया, करूंगा भी नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं है. एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस. अगेन फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन बताता हूँ शॉर्ट में. स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब है यू ट्राई टू अर्न द प्रॉफिट बाय डूइंग स्पेकुलेशंस. You try to earn the profit by looking at the price difference. Let us say I stay in Thane. Pardon? What's your name? Jyoti. Jyoti has some gold jewelry she wants to sell. She wants to sell. I have a shop in Thane. I offered her rupees 1,20,000 for the gold jewelry she wants to sell. So I paid her 1,20,000 and I took the gold jewelry from her. Same gold jewelry will fetch me 1,25,000 if I sell it in the Zaveri Bazaar in Mumbai. वहां पे थोड़ा प्राइस ज्यादा मिलेगा. यहाँ पर लोकल मार्केट में और मुंबई के मार्केट में प्राइस डिफरेंस है थोड़ा सा. उस प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए मैंने क्या किया, I bought at a lower rate and I sold at a higher rate. इस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ खेलना और प्रॉफिट अर्न करना इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस. वेरी सिंपल वर्ड्स. बहुत बेस्ट एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम तीनों. एक पॉइंट तक टॉलरेट करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, बोल देता हूँ. I don't want to insult anyone in front of the whole class. I don't want to hurt anyone's feelings. Rules are very clear. Day one से बोला, मैं बोल रहा तब चुप बैठने का. You are paid for that. चुप बैठो ना. नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बकवास बोल रहा हूँ, फालतू बात कर रहा हूँ. You can argue with me. If I'm teaching something wrong, you can argue with me. People argue, no doubt. सीएमए फाइनल में पढ़ा था मैं, बच्चा झगड़ा करता था, ऐसे ही आंसर आएगा. ये बुक में ऐसा दिया है, तो बुक में रॉन्ग दिया है, ऐसे ही आएगा. नो ऑफेंस मीन फॉर एनीवन. चलेगा, करो आर्ग्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. फालतू बकवास नहीं करो. कहाँ पे था मैं? हाँ, स्पेकुलेशन बिजनेस. हम बात कर रहे थे स्पेकुलेशन बिजनेस की. तो स्पेकुलेशन बिजनेस में यू ट्राई टू अर्न द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस. I buy the gold in Mumbai and I sell in Chennai. And I buy from Chennai and I sell in Mumbai because Chennai में प्राइस कम है, मुंबई में प्राइस ज्यादा है. Assuming there is no difference in the quality of the gold. That is nothing but that is the speculation business. ठीक है भाई, बिजनेस है, उसका प्रॉफिट, उसका इनकम टैक्सेबल होगा ही होगा. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, is illegal income taxable?
as business income. Yes, भाई साहब इनकम के टाइम पे इनकम पे टैक्स लगने, जितना इनकम ज्यादा आएगा उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा उतना टैक्स ज्यादा आएगा। गवर्नमेंट तो चाहती है आप इनकम दिखाओ, आपका इलीगल इनकम है, इनकम अर्न्ड बाय व्हाटएवर मींस इज फुल्ली टैक्सेबल। Income tax will not differentiate between good and bad. For it, all income is taxable. Expenses में ऐसा नहीं है, illegal income taxable है, illegal expenses माइनस नहीं कर सकता है। लॉजिक क्या है सर? इलीगल इनकम टैक्सेबल इसके लिए किया है क्योंकि अगर वो टैक्सेबल नहीं करेंगे इट विल एनकरेज द पीपल टू अर्न मोर ऑफ द इलीगल इनकम, और इलीगल एक्सपेंस इसके लिए माइनस नहीं कर सकते, दैट विल डिस्करेज द पीपल टू spend any money on illegal activities. That's the whole logic. So illegal income 100% taxable by whatever means. Illegal expenses not allowed. Not allowed मतलब आप उसको इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। Is that clear to all? इनकम में क्या क्या आएगा मैंने बता दिया आज, क्लियर हुआ सबको?